Hello and welcome all. Welcome to the 36th edition of Water Series webinar presented by National Water Mission Minister of Jal Shakti, Government of India on the best practices of water management. We can say it's a dialogue with the district and municipal administrators, and this is the 36th edition. And let me introduce to all of you, we have with us eminent speakers and policymakers with us. We have with us Ms. Archana Varma, Mission Director, National Water Mission, Minister of Jal Shakti, Government of India. We welcome you, ma'am. She'll be delivering the keynote address in the beginning. Also, we'll set the context of this webinar series. We're also joined by Saumya Pandey, Chief Development Officer of Kanpur Dehat from the state of Uttar Pradesh, and we'll be joined by Varnali Deka, Deputy Commissioner of Kokrajhar from the state of Assam. She'll be joining us shortly. Before I hand over the session to Archana ma'am, we'll have a short video presented by National Water Mission. So can we have that video on screen, please? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। जल ईश्वर स्वरूप है, सौम्य, शालीन, जीवनदायक। प्रकृति का दिया ये जल रूपी वरदान पृथ्वीवासियों के लिए सिर्फ एक विरासत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसे आने वाली पीढ़ी के लिए संभालना आवश्यक है। और इस उद्देश्य की ओर पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। खेती के उपयोग में आने वाले पानी का अधिकतम उपयोग हो, इस दृष्टिकोण से मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहा है। और हमने नेशनल वाटर मिशन में 20% तक पानी के उपयोग में कमी लाने का लक्ष्य रखा है। सतह पर जो जल उपलब्ध है उसका उचित प्रबंधन, भूगर्भ के जो हमारे स्रोत हैं उनका ठीक से उपभोग हो, जो पानी हम अलग अलग क्षेत्र में उपयोग में लेते हैं उसका विवेकपूर्ण उपयोग हो, और उसके साथ साथ में जो पानी उपयोग के बाद में निकलता है उसका ठीक से ट्रीटमेंट हो, तो हम जल सुरक्षित देश को बना सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का विशेष ध्यान रखते हुए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत नेशनल वाटर मिशन की स्थापना की गई, ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिले, जल की बर्बादी को कम किया जा सके और राज्यों के भीतर एवं राज्यों के बीच जल का अधिक समान रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय जल मिशन के प्रमुख उद्देश्य हैं जल का डेटाबेस सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत रखना और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना, जल संरक्षण वृद्धि और संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना, शोषित क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान देना, 20% तक जल उपयोग कुशलता में वृद्धि करना और बेसिन स्तर के एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। देश के अंदर जितनी भी वर्षा होती है एक वर्ष के अंदर, हम उसका केवल 8% ही बचा पा रहे हैं। तो ऐसी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए हमें युद्ध स्तर के ऊपर जो है अपने जल प्रबंधन के कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और हमारा मंत्रालय जो है उस दिशा के अंदर सतत प्रयास कर रहा है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए राष्ट्रीय जल मिशन ने अनेकों कदम उठाए हैं, जिसके तहत कैच द रेन नामक एक खास कैंपेन शुरू किया गया है, जिसकी टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इसमें राज्य सरकारों, सामाजिक संस्थानों, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से एप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण और उसके उपयोग का अनुरोध किया है, जो कि वहां के सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुरूप हो, और वर्षा के पानी को बचाने और कुशलता से उपयोग करने की इस मुहिम में अधिकाधिक लोगों को साथ जोड़ने की पहल की गई है। साथ ही विभिन्न कलेक्टर्स को जिला स्तर पर रेन सेंटर्स की शुरुआत करने का अनुरोध भी किया गया है, जिसके माध्यम से आम लोगों को वर्षा जल संचय से जुड़ी तकनीकी जानकारी दी जा सके। कुछ प्रमुख संस्थानों और मंत्रालयों ने वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए कदम भी उठाए हैं। जल संरक्षण में समाज की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थाओं को भी साथ जोड़ने की पहल की गई है। Both in urban areas and rural areas,
Rainwater harvesting system must be made mandatory while sanctioning plans. We must ensure that water is not wasted and the groundwater reserves are recharged when the rain falls on the ground. We must catch the rain and store it. I am happy that the National Water Mission's campaign is taking up a timely initiative called Catch the Rain when it falls. वर्षा जल संचय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए समाज की जानी मानी हस्तियों ने भी इस कैच द रेन कैंपेन को बढ़ावा और सहयोग दिया। राष्ट्रीय जल मिशन लगातार जल संरक्षण हेतु ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम के रिवाइवल के लिए कार्य कर रहा है। इस दिशा में भारत के स्टेप वेल्स की धरोहर को संजोते हुए राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा स्टेप वेल्स ऑफ इंडिया नामक एक किताब लोकार्पित की गई, जिसमें 100 यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टेप वेल्स की जानकारी मौजूद है। We use as much as 85% of the water resources for irrigation alone, and therefore depleting the groundwater tables. So we have a situation where we need to improve the management of our water resources, and this cannot be done only through the central and state government programs, because water touches our lives, and that's where the National Water Mission has launched major initiatives. It conducts regular talks. Every third Friday there is a talk on water, and on every second Friday there is a talk on water technology issues. Apart from these initiatives, there is the initiative of Jal Shakti Abhiyan, which was conceived of in 2019. For a campaign to be really successful, it has to have the commitment of the top political leadership. And what better commitment can be there if the Prime Minister of the country gives this clarion call to the citizens to participate in this program. भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई जून में बारिश शुरू होती है। क्या हम अभी से अपने आसपास के जल स्रोतों की सफाई के लिए, वर्षा जल के संचयन के लिए 100 दिन का कोई अभियान शुरू कर सकते हैं? इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। हम अभी से जुटेंगे। हम पहले से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उन्हें दुरुस्त करवा लेंगे, गांवों में, तालाबों में, पोखरों की सफाई करवा लेंगे, जल स्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते की रुकावटें दूर कर लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संचयन कर पाएंगे। जल संरक्षण की अधिकाधिक जागरूकता और प्रशिक्षण का फैलाव भी किया जा रहा है, जिसके तहत वाटर टॉक नामक लेक्चर सीरीज चलाई जा रही है। इस पहल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वाटर टॉक सीरीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे पहुंचाया गया, और जिसके कारण न केवल प्रतिभागियों की संख्या बढ़ी, बल्कि देश विदेश से भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। साथ ही इन वाटर टॉक्स का सार एक बुक में भी कंपाइल किया गया है। इसके अलावा नेशनल वाटर मिशन की तरफ से वाटर कंजर्वेशन के अलग अलग टॉपिक्स पर टेक्निकल सेमिनार्स और वेबिनार्स भी किए जाते रहे हैं। साथ ही जिला अधिकारियों और म्यूनिसिपल कमिश्नर्स के साथ वीकली वेबिनार्स भी किए जाते हैं, जिसमें उनके द्वारा उनके क्षेत्र में की जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेस की चर्चा की जाती है। एवरी डीएम्स को रिक्वेस्ट किया कि हर जिले में एक रेन सेंटर नहीं तो एक जल शक्ति केंद्र खोलने के लिए। इस जल शक्ति केंद्र में जल के बारे में जितने भी जानकारी लोगों को मिलना चाहिए उसी के बारे में जानकारी मिलते हैं। बट वी हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वाटर एंड एंगेज दम इन डिस्कशंस, एंगेज दम इन thinking about the value of water so that they leave behind a very good legacy for their next generation. सिंचाई क्षेत्र में सुधार के लिए 26 बेसलाइन स्टडीज भी की गईं और साथ ही मांग प्रबंधन यानी डिमांड साइड मैनेजमेंट के लिए सही फसल नामक कैंपेन चलाया जा रहा है, ताकि किसानों को उनके क्षेत्र के अनुसार कम पानी की खपत वाली फसल की बुआई के लिए शिक्षित और प्रोत्साहित किया जा सके। और इसके लिए किसानों को वर्कशॉप्स भी दी जा रही हैं। राष्ट्रीय जल मिशन के इस कैंपेन के चलते
कुछ राज्यों ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पॉलिसी में बदलाव भी किए। औद्योगिक क्षेत्र में भी जल के कुशल उपयोग के लिए नेशनल वाटर मिशन लगातार निगरानी बनाए हुए है, जिसके तहत कई विभिन्न उद्योगों में वाटर ऑडिट्स भी किए जा रहे हैं। BIS की पार्टनरशिप के तहत वाटर अप्लायंसेस के स्टार रेटिंग का काम भी हो रहा है। जल क्षेत्र में स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान की संरचना के लिए राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इतना ही नहीं, विभिन्न रूप से जल संरक्षण को व्यवहार में लाने वाले संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल वाटर मिशन अवार्ड्स के जरिए 45 लाख रुपए तक के कैश प्राइजेस भी वितरित किए गए। साफ पानी और स्वच्छता मानव जीवन को पूर्ण रूप देते हैं। ये सच है, जल जीवन है, जल ही शक्ति है। That was the video. Now I may request Archana Varma, Mission Director, National Water Mission, Minister of Jal Shakti, Government of India, to share her vision on the best practice of water management and set the context of this webinar. Over to you, ma'am. Good evening, everybody. I, at the outset, apologize for a slight husky tone in my voice. That's because I am down with a cold. तो मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलूंगी बिकॉज आई थिंक हमारे ऑडियंस दोनों होंगे। कि अंग्रेजी टाइप है ज्यादा, क्या DMZ होता है? Ma'am, you can have a mixed dialect, both English and Hindi. नहीं, जनता भी है कि सिर्फ DMs है? If they are just DMs. Ma'am, audience is also there. We are live on social media as well, ma'am. Okay. Oh, but on social media you're not very popular. So anyway, I am Archana Varma, as Souvik has already introduced me, and I thank APEC for organizing these webinars very regularly. This is my first because we have not been able to organize many on this issue before. So in this 36th edition of Dialogue with DMs is very special to me because it is my first, and I also see Saumya Pandey here. And there's a little secret I want to tell about Saumya, that we met when I was JS DOPT. And in DOPT, we had this, we used to invite the top 20 candidates, and Saumya was one of them. So it's so, it's so pleasurable to see you as CDO of Kanpur Dehat, and, you've become a big girl now. And Varnali Deka is another very dynamic officer who's from Assam, which is my cadre. So I have taken over the National Water Mission in September only. And at the outset, I would like to clarify कि National Water Mission बस catch the rain नहीं है. Because catch the rain एक component है हमारे National Water Mission का. लेकिन नेशनल वाटर मिशन का मेन मिशन है कि ये जो साइलोज है हमारे, जो वर्किंग में वाटर के बारे में सोच में जो साइलोज है, उसको ब्रेक करने का। और क्योंकि वाटर जो है एक प्राकृतिक वस्तु है जो कि सरफेस वाटर, रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, इस टाइप के डिफरेंसेस को नहीं मानती है, वो तो बस बहती है। और इट डजंट इवन रिकॉग्नाइज बाउंड्रीज, वो नहीं जानती है कि उसको कानपुर देहात से बहना है या कहाँ गिरना है। सो सिंस वाटर इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेचर which becomes something of an economic value when it gets into our household, सबसे जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि वाटर जो है is a gift of nature and which is a limited resource। और मैं और क्राइसिस के बारे में क्या बोलूं, ऑलरेडी मेरे पहले जो
मूवी दिखाई गई उसमें क्राइसिस के बारे में ऑलरेडी उल्लेख है। तो हमारा जो सोच रहा है, इन आवर कल्चर, वी ग्रोन अप विथ वाटर एंड वी ऑलवेज थॉट ऑफ वाटर एज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, समथिंग विच इज फ्री, समथिंग विच विल लास्ट forever. So we have actually not taken water very seriously. And that is why the main intention of National Water Mission, इसलिए हमने एक बहुत ही सक्सेसफुल भोपाल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हम लोगों ने ऑल स्टेट मिनिस्टर्स को बुलाया, वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन और PHED, और सीनियर सेक्रेटरीज को बुलाया, ऑनरेबल PM ने एड्रेस किया। तो उनका भी यही मानना है कि वाटर जो है उसको हम भाग भाग में काट के ना देखें, और अगर हमें, और वाटर क्यों सेंट्रल कंसर्न इतना ज्यादा है, क्योंकि विदाउट वाटर कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। So even though it's a state subject, it's a national concern because there can be no growth without water. Water is intrinsic to life and growth, ये तो हर कोई जानता है। So हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम जो ये साइलोज हैं ये ब्रेक करें, हम वाटर को के पब्लिक डेटा को पब्लिक के समक्ष प्रस्तुत करें, वल्नरेबल एरियाज में जाए जो वाटर स्ट्रेस्ड है, हम पार्टनरशिप करें विथ ऑल स्टेक होल्डर्स, और बेसिकली हम ये जन जागरण करें कि वाटर जो है एक स्केर्स नेचुरल रिसोर्स है, और अगर हमने उसे रिस्पेक्ट नहीं दिया, उसको एफिशिएंटली यूज नहीं किया, तो वो फॉरएवर के लिए नहीं है। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि हम प्यार के बिना जी सकते हैं लेकिन पानी के बिना नहीं। तो हमारा जो नेशनल वाटर मिशन का जो मुख्य उद्देश्य, फ्यूचर जो उद्देश्य है, वो है कि हम ब्यूरो वाटर यूज एफिशिएंसी 20 अक्टूबर को गठन किए हैं, and this will act as a facilitator to states in promoting good practices in saving water, recycling water, reusing water, but above all recharging water, but above all respecting water also. हमने असम के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ भी आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ टैग करके we are trying to also revive our traditional water resources and develop a respect for our traditional water resources, जो कि बहुत ज़रूरी है, because as इस मूवी में दिखाया गया, there are 100 step wells which have survived over ages. So we have launched a very cute portal, and through this forum, I would like to say that please ask kids to go to this portal, because there we have our Piku, which is the national mascot, the dancing peacock, which in a very cute way is explaining about the 75 water heritage structures of our country. And उसको देख बहुत ज़रूरी है कि बच्चे देखें, ताकि हम ट्विटर पे भी है, इंस्टा पे भी है, और हमारा जल इतिहास पोर्टल भी है, so that there's a lot of awareness. If there are DMs here, or if there are chief development officers here, I would request them that take Piku to the schools, because when this Jal Itihas portal with Piku narrating stories of, say, Rani Ka Vav or Chand Bauri or Khuni Bhandara in a very interesting way, then the kids will get curious, and they are the future of tomorrow. And if they learn to respect water, then I think half our work will be done. So that is one thing that we want the Jal Itihas portal to become very popular, and so please help us get as many kids and viewership as possible. And if there are officers and citizens also, I will request everybody to visit the Jal Itihas portal.
Then the next thing I want to say is, which will be our future focus, will be on the Jal Shakti Kendra. It's not just a rain center. We have issued a guideline, which is part of our e-booklet, and this will become like the Krishi Vigyan Kendra. It will be a one-stop solution for everything in the district relating to water, be it information technology, be it knowledge about laws and frameworks. सब चीज वहां रहना चाहिए, ताकि अगर सिटीजन को जरूरत हो तो वो बस हमारे जल शक्ति केंद्र में जाए और उसके बारे में पता चल जाए. सो हमने उसे रेन सेंटर से बहुत चेंज करके एक एडवाइजरी निकाली है, which we have issued and launched उसी समय हमारे भोपाल कॉन्फ्रेंस में, along with our best practice. So I would also urge DMs and CDOs को टाइम नहीं रहता है, पढ़ते पढ़ते है नहीं, तो किसी को दे दे कि वो पढ़े, बिकॉज उसमें हम जो हमारी सोच है वो है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई साइलो नहीं रहना चाहिए ऑन वाटर मैनेजमेंट. देन हमारा डिस्ट्रिक्ट साइंटिफिक एक्शन प्लान है. मुझे बहुत खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बहुत ही कम पैसा दिए हैं, 2 लाख दिए हैं, बट उस 2 लाख के ऊपर भी कोई प्लान्स, बहुत कम प्लान्स आ रहे हैं फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स. सो डिस्ट्रिक्ट साइंटिफिक प्लान्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम कोई चीज जस्ट ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं, लाइक एज DMs, एज यंग ऑफिसर्स, वी आर वेरी टेकन इन बाय इनोवेशंस, तो खुद बस कुछ स्टार्ट कर देते हैं. उसको सस्टेन करना, उसको आगे ले जाना, उसके बारे में नहीं सोचते. उसमें 4 फोटो खिंचा लेते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, बस हो जाता है कि काम खत्म. उसके बाद आप जब चले जाते हो तो वो काम भी खत्म. सो उसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप में कोई प्रेडिसेसर सक्सेसर सिंड्रोम ना रहे, और आप ऐसा डिस्ट्रिक्ट साइंटिफिक प्लान बनाए विच इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक, जियो टैग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस तरह का डेटा, if possible, in your district. I think we can see that there is some problem with ma'am's health. Uh, you take your time, ma'am. That's not a problem. Yeah. Uh, Ma'am, if you can unmute your mic, please. Yeah. Okay. मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि आई एम हैविंग अ ब्रीदिंग wheezing problem. But all I want to say is that to achieve any big idea, you need good water warriors in the field. We need good DMs, good CDOs in the field. So unless they are good, an idea will just remain on paper. So with that, and उसमें persistent work ज़रूरत है. So because of my health, I will not speak much, and I will request Saumya to present her paper. I think she's done some excellent work in water management,
in Kanpur Dehat. So over to you, Saumya. Thank you so much, ma'am. Shovik ji, I'm audible, right? Yes, yes, Soumya, you're audible. Yeah. A very, very good evening, ma'am, and it's such an honor and privilege to be able to present my ideas before you. Ma'am, I clearly remember the day of 1st June 2017 when I was selected and I was ranked 4, and first time I entered in that DOPT, this thing, ma'am, where we were felicitated by Honorable Minister. And I saw you, you were the first lady IS officer that I saw live, ma'am, and those memories just came across alive when this thing came up, ma'am. And I'm feeling so privileged and so honored to be able to share my ideas and get so much of valuable guidance from you. I was noting down everything, ma'am, and these points are so important. For example, you mentioned about the Piku mascot, ma'am. Till date, we have not done any awareness. We go to schools, we go for schools checking, we do all the Nipun Bharat thing. But if we could, if now from now on, I'll make sure that wherever I go, I'll call the basic Shiksha Adhikari also, that in all our primary schools, this Piku mascot is painted in all our school buildings and walls. And the movies that Jal Itihas stories that are shown in our schools, ma'am, because we have smart classes in almost all the government schools, ma'am. Similarly, the Jal Shakti Kendra, we were only centered till now, we were thinking it as a rain center, only as a technical aspect, but we were never thinking it from a holistic point of view. But now, ma'am, since you've given us so much of guidance, we'll make sure that our Jal Shakti Kendra is combining all the related departments, whether it be irrigation, minor irrigation, rural development, and everything, ma'am. And also the advisory and booklet, I'll take it from the The website, Jal ma'am. Shakti Kendra advisory, Saumya, is inside that best practice booklet, which is a flip book. Okay, It's ma'am. all on the portal. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Right, ma'am. Right, ma'am. And the district scientific action plan also, now we will brainstorm more and make it a plan so that it is sustainable and we work in a very scientific and planned manner, ma'am. With this, ma'am, I'll take your permission to start the presentation, and I'll request Mr. Goswami to share the screen present with the presentation. So, ma'am, I'll take 1 minute to explain what was the idea behind it. Ma'am, this is a logo that I designed myself, getting inspired from National Water Mission and Jal Shakti Abhiyan. We started a project in Kanpur Dehat and we named it Jal Abhishek Karyakram. And this is a logo, ma'am, that we designed. This is a map of Kanpur Dehat, and in between we have written Jal Andolan se Jan Andolan. कि मैम जल आंदोलन के माध्यम से, जैसे आपने बताया मैम कि जन सहभागिता को जोड़ना है, सिर्फ इसको ऑफिसर सेंट्रिक नहीं रखना है, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए इसको जल आंदोलन से जोड़ने का प्लान बनाया. और मैम हम लोगों ने एक एनालिसिस भी की, आगे के स्लाइड्स में मैम मैं बताना चाहूंगी, जिसमें हम लोग ने एक आंकलन किया कि अगर हम लोग वाटर कंजर्वेशन के हर पैरामीटर पे काम करते हैं तो 12,700 करोड़ लीटर का जल संचयन हम लोग कर सकते हैं, मैम. सो दिस इज अ फिगर दैट आई केम आउट साइंटिफिकली. तो मैम, दिस इज द लोगो ऑफ जल अभिषेक, एंड इसको एक मूवमेंट की तरह हमने स्टार्ट किया. नेक्स्ट स्लाइड. मैम, दिस इज अ फैक्ट शीट ऑफ कानपुर देहात. जो इस अभियान को शुरू करने के पहले मैंने सब लाइन डिपार्टमेंट्स को बुला के एक एनालिसिस किया. मैम, इन आवर डिस्ट्रिक्ट देयर आर 10 ब्लॉक्स, and in 2017 only 4 blocks were in semi critical category, but unfortunately in 2020 this number increased to 7. So in 2020 there were 7 blocks in our district which are in the semi critical category. Then I did an analysis, ma'am, of the water budget for our district. So we found out ki water requirement for agriculture, for example, is 17,000 crore liter. Similarly for human and animals it is 7,000 crore liter. This data I got from the concerned department, ma'am, like the agriculture department and other departments. Runoff, our average rainfall is about 800 mm. So available runoff from rainfall is about 40,000 crore liters. And currently out of this 40,000, we are able to harvest only 8,000 crore liters of water. So that means the rest of the water is getting wasted. And currently our district is facing a deficiency of about 16,000 crore liter of water. So this gave us a background of what quantum and how much momentum we need to put in our Jal Shakti Abhiyan and Jal Abhishek program. Next slide.
Ma'am, this fact sheet, this is the entire summary or the scientific plan which I could gather when I did a meeting with the concerned department, ma'ams. So this is the 13-point action plan which I made, in which I've tried to incorporate all the departments, ma'am. All the departments which are there, which are related directly or indirectly with the water conservation. And below, I have shown the achievements. Ma'am, here I would like to mention that for technical expertise, I took help of GIZ institution, German Indo Collaboration Institution, and I requested them to prepare a GIS map for us. That 2 lakh rupees, the Dhanrashi that we got, ma'am, I had requested, I'd sent a letter to Remote Sensing RSAC for making a GIS plan for our district. But that somehow, ma'am, got very late. So I collaborated with GIZ. And in the right side, ma'am, this map is very small. In the next slide, I'll enlarge it and show this is the entire GIS map plan for water conservation that we prepared. So, ma'am, I will take point by point. Ma'am, from GIS data and satellite data, we found out that we have about 3,223 water bodies in our district with expected storage capacity of 2,917 crore liters of water. Ma'am, these are all the points that I could think of when I thought about water conservation. So the number one was existing water bodies. मैम वो छोटे तालाब हो सकते हैं, बड़े तालाब हो सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरह का वाटर बॉडी हो सकता है. मैम, इन आज़ादी का अमृत महोत्सव, अमृत सरोवर एंड अमृत वाटिका प्लान was being launched. So ma'am, in our district we took a target of 634 Amrit Sarovar and correspondingly near the Amrit Sarovar, Amrit Vatikas. Ma'am, in our district, there are 2,629 government buildings, including rural and urban areas. So we made a target that in all the government buildings, we will have rooftop rainwater harvesting done. And if we do that, we could have saved about, or we could have recharged about 51 crore liter of groundwater. In our district, ma'am, there are 4 rivers: Pandu River, Rind River, Sengur, and Yamuna main branch. So it has a drainage of 18,077 kilometers. And we took the eco restoration of these rivers one by one. One river, ma'am, we have done eco restoration. I'll share it in the subsequent slides. Ma'am, then we made a catchment area treatment planning. So, ma'am, Kanpur Dehat is amongst the top 5 districts of UP which has maximum degraded land, ma'am. So we have 53,976 hectare of degraded land. So with the help of Bhumi Sanrakshan Vibhag, we took a target to at least take one land patch in every block and work for land degradation, because ma'am, that is also linked with water conservation. Then ma'am, with the help of GIZ, we found out 585 groundwater recharge potential sites. अगर मैम इन एरियाज पे हम काम करते हैं 585 एरियाज पे, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का पोटेंशियल बहुत ज्यादा था. तो यहाँ पे हम लोग अपने चेक डैम्स या यहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनाने का हम लोगों ने प्लान लिया मैम. इसी तरह मैम, हम लोग के पास वाटर कंजर्वेशन पोटेंशियल साइट्स 250 हैं, तो इसको हम लोगों ने टारगेट किया. मैम, जो हम लोग का एग्रीकल्चर कमांड एरिया है वो अबाउट 62,963 किलोमीटर है. हमने मैम हैंडपंप्स का आंकलन कराया, तो हमारे यहाँ 6,312 ऐसी जगह थी जहां हम सोकपिट हमने प्लान किया. इसी तरह मैम, हमारे पूरे जनपद में 91 डगवेल्स हैं, उनको हम लोगों ने रिचार्ज के लिए लिया. इसके साथ मैम हमने जल जीवन मिशन को भी जोड़ा, बिकॉज हर घर नल इज ऑल्सो रिलेटेड टू कि अगर हर घर नल यूज होगा तो पानी का वेस्टेज नहीं होगा, नल से पानी आएगा. तो हम लोग के मैम FHTC, functional household tap connection, almost 2,96,000 functional household tap connections का टारगेट रखा. एंड मैम, एज यू सेड, ऑल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने का, तो हमने PPP कोलैबोरेशन भी रखा, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी इन्वॉल्व किया. सो दिस वाज द प्लान मैम. अगर ये सब हम कर लेते तो हमारा 12,700 करोड़ लीटर पानी बच सकता था. इसके नीचे मैम हमने दिखाया कि पिछले 1 साल में इस प्लान के अंतर्गत हम अचीव क्या क्या कर पाए. तो मैम, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म कि हमने हर गांव में एक जल चौपाल ऑर्गेनाइज की है, और जल चौपाल के साथ प्रधानों से हमने वाटर बजट बनवाया है मैम. तो वी हैव 618 ग्राम पंचायत इन आवर डिस्ट्रिक्ट, और एवरी ग्राम पंचायत का हमारा वाटर बजट तैयार हो गया है. तो एक वाटर बजट का फॉर्मेट हमने शेयर किया था सबके साथ. हर प्रधान सचिव ने मिलकर एक वाटर बजट अपने अपने गाँव का बनाया है कि कितना पानी आ रहा है मैम, और कितना जा रहा है, और कितना उनको जरूरत है. इसी तरह मैम, हम लोग की जो वाटर बॉडीज हैं, 1650 वाटर बॉडीज हम लोग की कंप्लीट हो गई हैं, आइदर रिजुविनेशन में या नई वाटर बॉडीज में. हम लोगों ने 82 अमृत सरोवर्स कंप्लीट कर लिए हैं मैम, और हम लोगों ने 650 रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग साइट्स भी बना लिए हैं. अलग से मैम बजट नहीं था, वी यूज दी ग्राम पंचायत बजट, क्षेत्र पंचायत बजट, स्कूल पे, आंगनबाड़ी पे, पंचायत भवन पे. हम लोगों ने पांडू रिवर का इको रिस्टोरेशन किया है मैम, जिसमें हम लोगों ने 160 करोड़ लीटर ऑफ वाटर का रिचार्ज कैपेसिटी बढ़ाई है. इसमें हम लोगों ने मैम डीसिल्टिंग कराई है और बैंक्स को डीप कराया है.
मैम हम लोग सेंगूर नदी का डीपीआर इस समय बना रहे हैं और रिंद रिवर का भी। इसी तरह मैम लैंड रिक्लेमेशन में अभी हम लोग 1528 हेक्टेयर ऑफ लैंड रिक्लेमेशन का काम कर चुके हैं। और मैम सोक पिट्स पिछले एक साल में हम लोग ने 4819 सोक पिट्स बनाई हैं। और एक परौक गांव है मैम, हम लोग के जो प्रीवियस प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी थे, उनका ये नेटिव विलेज है मैम। 4 months बैक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो विजिटेड दैट विलेज मैम। उसको हमने वाटर आइडियल गांव बनाया है और वहां पे हमने 80 लाख लीटर्स ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज का कैपेसिटी बनाई थी मैम थ्रू दीज मेजर्स। इसके अलावा मैम वी हैव हाइड्रोग्राफ स्टेशन जहां से हम ये मेजर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस मैम पॉइंट नंबर 12 में हम लोगों ने इंडिविजुअल जो फार्मर्स हैं उनमें ड्रिप एंड स्प्रिंकलर का खूब प्रचार प्रसार किया है, क्योंकि ड्रिप एंड स्प्रिंकलर से पर क्रॉप मोर ड्रॉप हम लोग यूज करके वाटर एफिशिएंसी यूसेज बढ़ाया है मैम। हम लोगों ने फॉरेस्टेशन का वृहद कैंपेन जैसे हर बार होता है, उसमें हम लोगों ने एसएचजीज को भी इन्वॉल्व किया है मैम। होता क्या है, हर साल हम लाखों पेड़ लगाते हैं पर सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है, तो हमने इस बार ओनरशिप मैम सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी है और उनको मनरेगा के अंतर्गत हम पे करते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वाटिका को मेंटेन करेगी, मनरेगा से उनको मजदूरी मिलेगी उसको मेंटेन करने के लिए, वाटरिंग करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम लोगों ने मैम इसको नाम दिया है प्रेरणा वाटिका, प्रेरणा फ्रॉम विमेन एसएचजी को, और वाटिका क्योंकि हमारी वाटिका है, तो हमने बहुत सारी प्रेरणा वाटिकाएं बनाई है मैम जो सर्वाइव भी कर रही हैं। इसके अलावा मैम फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन 43,000 हमारे डिस्ट्रिक्ट में बनाए जा चुके हैं। और मैम हम लोगों ने इंडस्ट्रीज के साथ एक मतलब हम लोगों ने अपना लोकल सिस्टम बनाया है कि हम अंडरग्राउंड वाटर एनओसी किसी भी इंडस्ट्री को तभी देते हैं मैम जब वो उसके कमेंसरेट, जितना वाटर वो एक्सप्लॉइट करिए उसके कमेंसरेट या तो वो खुद रिचार्ज करे, नहीं तो किसी गांव को अडॉप्ट करके वहां कोई पॉन्ड को अडॉप्ट करे और उतना वाटर जितना वो एक्सप्लॉइट करिए उससे ज्यादा वो रिचार्ज जब तक नहीं करती है तब तक मैम ग्राउंड वाटर एनओसी डिस्ट्रिक्ट से हम लोग इशू नहीं करते हैं मैम। ये हम लोगों ने एक लोकल सिस्टम बनाया टू इनकॉर्पोरेट द प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट स्लाइड मैम, दिस इज द अमृत सरोवर इनिशिएटिव। ये मैप भी मैम जीआईजेड के थ्रू मैंने बनवाया था, जिसमें हम लोगों ने जो ब्लू डॉट्स हैं ये हमारे अमृत सरोवर को शो कर रहे हैं। मैम अप टू 1 हेक्टेयर के पॉन्ड्स हमने लिए थे 618 अमृत ग्राम पंचायत में और अर्बन एरियाज में भी। अभी मैम ये 82 का फिगर बढ़ के हमारा लगभग 140 के आसपास पहुंच गया है जो हम लोग के अमृत सरोवर है। और मैम हम लोगों ने इन हाउस ऐप डेवलप किया था, ई पहल ऐप। इसके थ्रू मैम हम लोग रेगुलर ई पहल ऐप हमने सब रोजगार सेवक, सब ग्राम सचिव, हर ग्राउंड लेवल फंक्शनरी को दे दिया था कि वो जहां जाएगा जो भी काम करेगा फोटो खींच के जियो टैग फोटो अपलोड कर देगा। और यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड मैं खुद देखती थी मैम, जिसमें हम लोग को पता चल पाता था कि कितने तालाब बने, कितने ऑनगोइंग है, और उसकी जियो टैग फोटोज और मॉनिटरिंग मैम ई पहल ऐप के माध्यम से होती थी। नेक्स्ट मैम, ये लैंड डिग्रेडेशन का है। हमारे मैम एसडीजी गोल नंबर 15 में भी लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की बात की गई है मैम। एंड ऑनरेबल पीएम सर ने भी कॉप में बोला था, कॉप 2019 में कि 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड है जिसको हमें रिस्टोर करना है बाय 2030। तो सिंस कानपुर देहात मैम हम लोग का मेजर डिस्ट्रिक्ट है, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी में आता है जहां लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है, तो ये मैप हमने कानपुर देहात का डेवलप कराया मैम विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट एंड जीआईएस, जिसमें हमने देखा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में किस तरह के लैंड है। तो मैम ये निकल के आया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो सॉल्ट अफेक्टेड एंड वाटर लॉग्ड एरिया ज्यादा है और सदर्न पार्ट में रेवाइन लैंड ज्यादा है। तो मैम एक मैंने टेबल ये बनाया और ये कंसर्न लैंड डिपार्टमेंट्स को इस तरह से काम डिवाइड किया कि जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द एरिया है जहाँ पे हमारे सॉल्ट अफेक्टेड सॉल्ट अफेक्टेड एरियाज है, वहां पे मैम भूमि सुधार निगम, भूमि संरक्षण विभाग और मनरेगा के अंतर्गत उस तरह की एक्टिविटीज ली जाए, और रेवाइन लैंड में मैम मनरेगा के अंतर्गत जो रेवाइन एरियाज के लिए लैंड है वो ली जाए। तो ये हम लोग ने मैम डिग्रेडेड लैंड पे स्पेशली काम किया। इसमें अभी हम कम काम कर पाए हैं मैम, क्योंकि हमें थोड़ा टेक्निकल गाइडेंस इसमें चाहिए था रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से। मैम इसमें हम लोग आगे काम और करेंगे। नेक्स्ट मैम, ये रिवर इको रिस्टोरेशन का जैसे मैं बता रही थी मैम, 4 मेजर हम लोग की रिवर्स हैं। इसमें हम लोग ने जो मैम पांडू रिवर है उसका हम लोगों ने रिस्टोरेशन लास्ट ईयर में कंप्लीट किया है और 160 करोड़ लीटर्स ऑफ रिचार्ज कैपेसिटी उसमें डेवलप किया, मतलब जनरेट किया है मैम। और अभी सेंगूर रिवर, रिन रिवर का डीपीआर हम प्रिपेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ मैम ये जो 585 ग्राउंड वाटर रिचार्ज पोटेंशियल साइट्स हैं और 250 वाटर कंजर्वेशन पोटेंशियल साइट्स हैं, इसमें भी मनरेगा के अंतर्गत मैम हम लोग टारगेटेड काम करा रहे हैं। नेक्स्ट मैम, ये ई पहल ऐप है, ये हम लोग का एक डिजिटल टूल है जिसमें हम लोग ने फर्स्ट एवर जीआईएस बेस्ड मॉनिटरिंग शुरू किया है। इसमें मैम मल्टीपल यूजर्स ग्राम लेवल से लेके टॉप लेवल तक है, जियो वेरिफिकेशन जियो टैग्ड एसेट से करते हैं। एंड मैम इसमें कन्वर्जेंस हमने हर डिपार्टमेंट का किया है और अल्टीमेटली हमारा एंड गोल है मैम कि गांव में जितनी परिसंपत्तियां हैं रिलेटेड टू वाटर, तो जल धरोहर एक क्रिएट करें कि एक गांव का जल धरोहर क्या क्या है वो इसमें मैम हर गांव वाइज हम फीड कराना चाहते हैं फ्रॉम ग्राउंड लेवल फंक्शनरीज। नेक्स्ट
मैम ये एक सिंपल मैंने बस दिखाया था कि परौक गांव में चूंकि हम काम कर रहे थे, तो वहां पे मैम कितना ग्रेडियंट फॉल हुआ है ड्यू टू शीट इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन, वो हम इसमें दिखाना चाह रहे थे। और परौक में हमने लैंड का रिस्टोरेशन का काम कंप्लीट कर लिया है मैम। तो अब ये ग्राफ काफी हम लोग का ठीक हो गया है, जो काफी डीप स्लोप था शीट इरोजन का, भी इंप्रूव हो गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैम इसके बाद मैं ये डेटा शेयर करना चाहती हूँ मैम। नेक्स्ट मैम कल ही मैंने अंडरग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के एई को बुलाया था, और मैम मैंने उनसे पूछा कि हम लोग के यहाँ लगभग जो 100 पीजोमीटर्स लगे हैं अंडरग्राउंड वाटर लेवल को मेजर करने के लिए, उसका डेटा क्या है इस बार का, ताकि हम अपना जल अभिषेक का एक्चुअल इफेक्ट देख पाए। नेक्स्ट स्लाइड। मैम ये हमारा कानपुर देहात का मैप है। जो येलो से एरिया शेडेड है वो हमारे जो 7 ब्लॉक्स हैं ये हमारे सेमी क्रिटिकल में आ रहे हैं, और नीचे जो लाइट ब्लू कलर से शेडेड है मैम ये हमारे सेफ कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने मैम जो सेमी क्रिटिकल कैटेगरी में मैंने ज्यादा फोकस किया था मैम हम लोगों ने, तो इसका मुझे पीजोमीटर से डेटा देखना था कि जल अभिषेक जो इतना हमने करवाया, वृक्षारोपण, तालाब खुदवाना, उससे फर्क क्या पड़ा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। तो मैम डेटा काफी पॉजिटिव आया है हमारे पास। नेक्स्ट मैंने ग्राफ के थ्रू मैम नेक्स्ट मैंने ग्राफ के थ्रू मैम एक एक प्लॉट कराया है। जैसे मैम पहला हमारा ब्लॉक है अकबरपुर। मैम अगर आप देखेंगी तो 2021 से 22 में हम लोग का राइज हुआ है। 2021 में अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो 10.04 मीटर बिलो ग्राउंड था वो अब 7.85 मीटर हो गया है। तो मतलब मैम हम लोग का 3 मीटर लगभग अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा है पिछले एक साल में, 21 से 22 में, जब हम लोगों ने इतना रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ये सब चीजें कराई। और ये मैम हाईएस्ट 7.85 मीटर हाईएस्ट मतलब वाटर लेवल है पिछले 2016 से लेकर 22 में। और अकबरपुर मेन मैम हम लोग का मुख्यालय का ब्लॉक है, जहाँ सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। यही सारी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन सेटलमेंट यही है। तो यहाँ मैम हम लोगों ने वृहद रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग चीजें कराई थी, और इसमें हम लोगों ने पिछले 2016 से लेकर अभी तक सबसे हाईएस्ट वाटर लेवल मैम रिकॉर्ड किया है। इसी तरह मैम सरवनखेड़ा ब्लॉक में भी लास्ट ईयर से 1 मीटर वाटर लेवल बढ़ा है। डेरापुर में भी हम लोग का मैम 3 मीटर के आसपास वाटर लेवल बढ़ा है। नेक्स्ट इस तरह मैम मैथा में भी बढ़ा है, झींझक में भी बढ़ा है। मलासा ब्लॉक में मैम ये डेटा मुझे आगे अब एनालाइज करना पड़ेगा, इसमें हम लोग का 0.1 मीटर वाटर लेवल घटा है। तो ये दिस मैम इज अ थिंग दैट वी हैव टू सी की मतलब इतना सब कराने के बाद भी मलासा में व्हाई द वाटर लेवल हैज डिक्लाइंड। तो दिस मैम वील हैव टू चेक, क्योंकि जो ये तो मैम सीधे पीजोमीटर का डेटा है जो हमने प्री मानसून उठाया था। रसूलाबाद जो ब्लॉक है मैम वहां पे भी हम लोग का वाटर लेवल बढ़ा है। नेक्स्ट मैम ये कुछ हम लोगों ने फोटोज एंड में शेयर की हैं जो पीजोमीटर से डेटा हम लोग कलेक्ट करा रहे थे, कल की फोटोज है मैम। नेक्स्ट मैम ये जल चौपाल की कुछ फोटोज है। इसमें मैम मैं गई थी, मैंने डीएम मैम को भी इनवाइट किया था। गांव में गांव वालों के साथ बैठ के रंगोली बना के नुक्कड़ नाटक करा के गांव के बीच में बैठ के मैम हम लोग पर्सनली जाते थे, और ऑलमोस्ट हमने हर गांव में इस तरह के जल चौपाल ऑर्गेनाइज कराए। नेक्स्ट मैम प्लांटेशन वर्क्स में हम लोगों ने 59 लाख प्लांटेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से था, लेकिन उसको हमने जल अभियान, जल शक्ति अभियान से जोड़ा कि जो प्लांटेशन हो रहा है उसको हम लोग जल शक्ति से जोड़ के लोगों को प्लांटेशन की इंपॉर्टेंस बताएं पानी के लिए भी। इसमें मैम हम लोगों ने जगह जगह दोहे भी पेंट कराए थे, जैसे मैम आप बता रही थी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं वाटर के बारे में। हमने भी मैम जगह जगह जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो मैम एक पीपल्स कनेक्ट बनाने के लिए पानी की इंपॉर्टेंस को हम लोगों ने काफी पेंटिंग, वॉल पेंटिंग के माध्यम से भी गांव गांव में प्रचार प्रसार कराया। नेक्स्ट ये मैम पॉन्ड्स का काम जो मनरेगा के अंतर्गत चल रहा था। नेक्स्ट मैम भूमि संरक्षण में जगह जगह जो पेरिफेरल डैम्स, चेक डैम्स और बंड्स जो बनाए गए थे उसकी कुछ फोटोज हैं। नेक्स्ट ये मैम सोक पिट्स हम लोग ने मैम पंचायती राज का मैंने इसमें फंड यूज किया मैम 15th फाइनेंस कमीशन का। हर गांव में मैम जो 15th फाइनेंस कमीशन का टाइट फंड होता है वो वेस्ट हो जाता था ऐसे ही कुछ भी नालियां बनाने में, खड़ंजा बनाने में, तो उसको हम लोगों ने डेडिकेटेडली प्रधानों के साथ कई बैठकें करके ये मैम मैं कई मीटिंग्स मैंने ली कि हर गाँव में हमारे सोक पिट्स बने, जिससे कि जो हैंडपंप का पानी है वो वेस्ट ना होकर सोक पिट के माध्यम से रिचार्ज हो। नेक्स्ट ये मैम स्कूल्स में, जैसे हम लोग स्कूल्स में जाते थे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बता के, बट इसमें हमारा पीकू हर जगह मिसिंग है। तो अब मैम हम लोग इंश्योर करेंगे कि कैच द रेन में जब हम स्कूल्स में टारगेट करें तो पीकू को जरूर इसमें हाईलाइट करें। नेक्स्ट मैम एग्रीकल्चर में ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन की हमने खूब ज्यादा प्रचार प्रसार करा के कई किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर दिलाया कि वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़े। नेक्स्ट मैम जल जीवन मिशन में हर घर नल का जो हम लोगों ने दिए हैं वो मैम जल निगम से कोऑर्डिनेट किया कि हर घर में जल्दी से जल्दी पानी की टोटियां लगें। नेक्स्ट
ये मैम कुछ मीडिया कवरेज थी, मीडिया में लगातार हम देते थे कि जल संरक्षण कितना इंपॉर्टेंट है। और मैम इस तरह एक हम लोगों ने इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस से कोशिश किया। अभी तक हमने जैसे मैम 2700 करोड़ लीटर्स रिचार्ज का कैपेसिटी बना लिया। इसको मैम इसको एक साइंटिफिक तौर पर एक इंस्टीट्यूशनलाइज करके इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं मैम। एंड इफ यू परमिट मैम, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई है 3 मिनट की ऑफ द एंटायर वर्क्स, तो मैम वो मैं एक बार आपको दिखाना चाह रही थी। एक बार वो यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री चला दीजिए प्लीज, जल अभिषेक। महामहिम राष्ट्रपति जी के आह्वान, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से जनपद कानपुर देहात में जलाभिषेक कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 2022 में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा तकनीकी एवं वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाते हुए जन सहभागिता के माध्यम से जल संरक्षण एवं जल संवर्धन को बढ़ाने हेतु नवीन पहल की जा रही है। केंद्रीय भूगर्भ जल बोर्ड की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कानपुर देहात जनपद के 10 में से 7 विकास खंड सेमी क्रिटिकल श्रेणी के अंतर्गत आ गए हैं, जिस पर विराम लगाना अति आवश्यक हो गया है। अंतर विभागीय समन्वय एवं जन सहभागिता के माध्यम से गांव-गांव में जन चौपाल एवं जल चौपालों से वाटर बजट की योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिसमें अमृत सरोवर, अमृत वाटिकाओं का निर्माण और तालाबों का सुदृढ़ीकरण जैसी जल संरक्षण एवं जल संवर्धन परिसंपत्तियों के सृजन करने के लिए एक एकीकृत जीआईएस आधारित रिचार्ज प्लान तैयार किया जा रहा है। जनपद में वृक्षारोपण, भूमि सुधार विभाग के माध्यम से छोटे-छोटे बांध, बीहड़ भूमि संरक्षण और लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से सेंगूर, पांडु और रिंद नदियों के जीर्णोद्धार तथा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली एवं सोक पिटों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही कृषि व उद्यान क्षेत्र का सर्वेक्षण कर कम जल खपत वाली फसलों के उत्पादन और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जनपद में वन विभाग द्वारा वृहद वृक्षारोपण के कार्यों के साथ भूमि सुधार विभाग द्वारा अकृषीय भूमि पर जल संरक्षण कार्यों को कराते हुए कृषि योग्य भूमि तैयार की जा रही है। कैच द रेन अभियान के अंतर्गत वर्षा जल की हर एक बूंद को बचाने एवं जल की बर्बादी को रोकते हुए हर घर नल से जल को जोड़कर जल संवर्धन की तरफ सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार जनपद में लक्षित 12,700 करोड़ लीटर जल बचत की अप्रत्याशित वृद्धि के सापेक्ष अब तक कुल 2,783 करोड़ लीटर क्षमता सृजित कर ली गई है, जो एक नवीन पहल है। इन प्रयासों से तय है कि आने वाले समय में जल आंदोलन से जन आंदोलन की एक मिसाल बनेगा जलाभिषेक 2022 कार्यक्रम। मैम दिस वाज अ स्मॉल डॉक्यूमेंट्री जो हमने शूट कराई थी अपने ही उसके साथ मैम। और मैम आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आज मैम यू गेव अस अ चांस टू प्रेजेंट माय आइडियाज इन बिफोर यू मैम। एंड बहुत सारी चीजें हम सीख के भी जा रहे हैं मैम, और ये कुछ ऐसा ग्रुप या कुछ ऐसा बन जाए जिससे मैम आपके आइडियाज हमें लगातार मिलते रहें, गाइडेंस, एंड मैम वी कैन जस्ट गेट इन टच विद यू ताकि आपका सपोर्ट हमें डायरेक्टली मिल सके मैम। थैंक यू सो मच मैम। Thank you, Saumya. In fact, we should thank you for such a wonderful presentation, you know. Two things really stand out. Number one, we don't need money to succeed. I mean, you just didn't wait for कि National Water Mission मुझे पैसे दे, जो 2 लाख मिलना था वो भी नहीं मिला. You have managed resources because there are so many resources which are there in the district. So 1 रुपया बिना हमसे लिए, you have so wonderfully executed it. And second, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, it's evidence based. You're not talking in hot air, like you have planned very meticulously based on GIS data, and intersectoral convergence is the third thing which you've done. I mean, यही 3 चीजें हैं जो एक अच्छे
लीडर को होना चाहिए. The ability to manage people, ability to raise resources and get resources, and third is to execute scientifically. So तुमने तीनों चीज कर दिखाया है, which is बिल्कुल कमाल की चीज. Thank you, और ma'am. because Thank you're measuring it, ये नहीं है कि बस मैंने कर दिया, अब आउटकम क्या है पता नहीं. And you doing it. बस हमें इसी टाइप का हर डिस्ट्रिक्ट में, कानपुर देहात should become an example of how a great idea will just be on paper unless it is executed well in the field by our young officers. So excellent. I'm overwhelmed and impressed. And thank of course, what we'll do is maybe, we'll have more interactions. I'm just settling down right now. And इतना यहाँ पार्लियामेंट होता है, फिर हमारे कॉन्फ्रेंसेस, फिर द थर्ड जल शक्ति अभियान इज कमिंग ऑन मार्च 23rd. नहीं तो आई वुड लव मोर इंटरेक्शन विद, क्योंकि अगर डीएमसीओज वाटर के प्रति सजग हो जाए तो बस प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है. ma'am. Thank you, ma'am. We put this, ma'am, in the national water. Ma'am. पीपल के बिना कुछ नहीं हो सकता. And the best things get done when people get really interested. बस वही है कि जो हमारा मैसेज है और वाटर्स through पीकू will help us promote that. That will go a long way in developing respect for water, because हम लोग चाह रहे हैं कि एक behavior change भी आए कि भाई पानी जो है, जैसे मैं हमेशा अपने टॉक्स में बोलती हूँ कि माँ जो है जब दिल्ली आई तो शॉक्ड हो गई कि ये क्या पानी मीटर करके तुम लोग पैसा दे रहे हो, ये क्या कर रहे हो. हम लोग तो जब मन करता है पंप से उठा लेते हैं. सो मैंने बपौती समझना ऑफ अ कम्युनिटी रिसोर्स, वो भी जाना मन से बहुत जरूरी है कि इट्स अ कम्युनिटी रिसोर्स, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है. अंडरग्राउंड वाटर इज नॉट आवर पर्सनल प्रॉपर्टी. तो वो सब बिहेवियर चेंज. अब जैसे अगर हमारी एक बैचमेट है मनिंदर इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मनिंदर कौर द्विवेदी, मैम को जानती ही होगी शायद. तो मैम जो है वो मिलेट्स को बच्चों में प्रमोट कर रही है कि कैसे मिलेट से आप सुपर हीरो बन सकते हो और आपका मतलब सेव करता है प्लैनेट. तो बच्चों को वो एक्साइटिंग लग रहा है कि अच्छा हम कुछ मिलेट खाएंगे, अगर चावल और ये छोड़ देंगे चीनी, शुगर केन, जो भी वाटर गजलिंग प्लांट्स है, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएंगे, मिलेट्स खाएंगे. सो ये भी और करो, मतलब किड्स का ये नहीं है. तुमको हो सकता है आज इम्पैक्ट नहीं दिखे, लेकिन अब जैसे मेरी बेटी जो है मुझे डांटती है अगर मैं पानी खुला छोड़ देती हूँ तो कल वो भी साथ साथ बहुत जरूरी है. बिहेवियर चेंज, माइंडसेट चेंज अबाउट वाटर कि भाई ये प्रेशियस है, इसको संभाल के रखिए. एंड किड्स कैन बी वेरी परसुएसिव एंड बी बिग टेरर्स इन द हाउस. लाइक हम लोग पहले पानी, लाइट ऑन, सब में डांट खाते. क्लोथ्स की सस्टेनेबल फैशन पहनिए, पानी कम होता है. आप स्लो फैशन आजकल हो गया है. सो ट्राई दीज क्यूटसी आइडियाज विद किड्स इन स्कूल. सो वो बहुत इफेक्टिव होता है, बिकॉज वो माँ बाप ऐसे ही डर के मारे चेंज करना पड़ता है उनको. बट एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, we are also joined by Varnali Deka, Deputy Commissioner Kokrajhar from the state of Assam. So we welcome Varnali ji as well. With your permission, over to you, Varnali ji, for your presentation. Yeah. Thank you so So much. Varnali, I've already introduced you as being a fellow cadre and a brilliant officer. Varnali is a doer. I don't know how many awards she has to her credit. कि हम लोग अब काउंट भूल गए हैं. But she is brilliant and very, very intelligent. And wherever she goes, she delivers. Over to you, Varnali. Thank you so much, ma'am, for that
inspiring, I should say, introduction. After listening to Saumya's presentation, I just want to soak in all the stuff that she's done, because really, I mean, she's really done a wonderful job from, covering all aspects. और उसके बाद मुझे लग रहा था कि I should just sit and listen. I was feeling so nice listening to it. So, a very good afternoon, ma'am, Sauvik ji, Saumya, and all our listeners out there. I'll not make a very long presentation. And how much time should I take, ma'am? The session is getting extended. ऐसे तो 4:15 था, but we were waiting कि if you can join तो अच्छा होगा. So we are extending the session. 15-20 minutes should be fine, or Right. whatever. मतलब not more than that, because then people start to get fatigued. Will do, ma'am. I'm just trying to open the presentation, ma'am. Is it visible, ma'am? Yes, it's visible. You can just put it on full screen mode, ma'am. Yeah, I've put it on full screen. Are the slides changing now? Not Can you yet. see this? But we can see the slides, not the on a full screen mode yet. Okay, are the slides changing now? Yeah, now the slides are changing. Yeah. Okay, so then I think full screen. Please share entire screen, ma'am. There's an entire screen sharing option is there. Share screen. Yeah, share that entire screen. Then the PPT will come on screen. Okay, is it visible now? Yes, yes, ma'am. Now it's okay. And you can see the slides changing, right? Yes, 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 ma'am. Okay. So, yeah, I'll just start off quickly. I'm going to speak about initiatives that we've taken in two districts, Kokrajhar and Gwalpara districts of Assam. In fact, Archana ma'am has also been DM of Gwalpara district. So ma'am also knows the district very well. I'll start with Kokrajhar, which is my current district. A number of us would be aware that, it has been a very insurgency-prone district. It was a declared disturbed area and has had a very deep-seated history of insurgency and violence. District is disaster-prone, 50% forested area, and it is also well known as the entry point to India's northeast from the Chicken's Neck. So just to give a little background about the district, it has a very heterogeneous population mix, problematic reach and connectivity, and so on. I'll straight away go to the water initiatives. When I first joined the district, what I saw is that the net area that has been irrigated, irrigable area of the district is about 7,48,530, but till date only about 650 hectares had been covered, and the groundwater stage of groundwater development was only about 9%. So at that particular point in time, what we decided is that we decided to use the best of tradition and science, because we saw that Kokrajhar is a tribal majority district, and most of these tribal groups have various beautiful water management practices. So we decided to take a few of them and try to ramp it up with science. But then the challenge there was that we should not also destroy the traditional knowledge, the traditional indigenous knowledge, with the use of science. And the second was making water management the responsibility of every department. So the first practice that I would like to talk about are the dongs. Now, dongs are centuries old system. Basically, if we look at the entire Kokrajhar belt, we are at the foothills of Bhutan, highly forested, and ideally these are not areas that are suitable for human habitation. But with increase of the population pressure, about 100-150 years ago, the Boros and other tribes had moved into this region. We all of us would have studied in geography about the Himalayan Bhabbar region. So this is the Bhabbar region with very rocky substrata. Though we receive heavy rainfall, this rain immediately percolates down. So there is no way of catching this rain. So Catch the Rain has, the Catch the Rain campaign actually has a very different dimension when it comes to Kokrajhar or the entire belt, which is the Boroland territorial region. Water bodies are absent.
During the winters, there is water scarcity. Like this last few months, we have absolutely had no rainfall here. There are no perennial drinking water sources. So when these various tribal groups moved into these regions, the local population needed to find some kind of solutions to evolve their water management. Otherwise, they had to travel very long distances to reach water bodies, to reach drinking water, and also for their agriculture. And at the same time, we are about 90% dependent on agriculture. So this is how the dong system had come into place in a district like Kokrajhar. And dongs are basically some kind of canal and check dam systems. The canals are called dongs and the check dams are called bans. And here, another point that I would like to flag is that it is a very democratic use of water. They have various communities residing very closely, but the dong water is being the use of water is governed by Dong Ban communities, and some of them even have written constitutions on how this water use can be developed. Like ma'am was talking about madam's mom being in Delhi and about the water meter, and I was very surprised to see that a similar system existed centuries back in a back of beyond place like the Bhutan borders. So it is a very unstable environment, wide variations in water discharge. And of course, these people do not have any modern or formal engineering knowledge. It was mainly evolved by the locals through a process of trial and error. Here on the left side, on the left bottom, you can see these tripod-shaped structures. These are tini khutis, basically three-tiered structures. Three legged structures, and they are placed on the water with boulders to create a kind of flow. And because the water is very high flowing, this is water that has just flown down from the Himalayan foothills. So obviously the water has a very high velocity. So they are put on tiered structures called chang. So this is basically very basic, very age-old engineering that was used. So what have we done is that we have tried to club this with technology. When I joined the district, I saw that a number of these dongs were defunct. But the positive point of using this dong network is that these are networks which cover the essential points of human population. So we took up 12 dongs as a pilot, and through our irrigation department, we created certain modern interventions. Here again, we had to keep in mind that it should not, completely override the ancient traditional technologies. And we could treat 12 dongs, and the NIA was increased from 808 hectares to 2310 hectares. Also, Archana ma'am was talking about using the younger generation. Ma'am said cutesy ideas with kids in school. So this is something we had tried in Kokrajhar with the use of Poshan clubs. About a year back, we launched Poshan clubs in all the 1611 schools of the district. And these Poshan clubs are basically tasked with changing community apathy towards various measures of sustainability, including swachhata, including jal, including malnutrition, and so on. And very shortly, within a very short period of time, these Poshan clubs had created Bal Sansats in all of the 1611 districts. We have about 15,000 members, 15,000 children who are members of these Poshan clubs. And at the same time, they have conducted Bal Sabhas in all of the villages of the district and outreach programs in 1064 villages. So the whole idea is that these children have become the leaders and drivers of societal, attitudinal, and behavioral changes. And they are the ones that talk about water conservation and water management. So over time, also the advantage is that immediately through the children, through about 1.8 lakh children that are enrolled, we are able to reach out to 1.8 lakh families, and we are creating a Jan Andolan. This was how Poshan clubs were, incentivized. Every month, the best performing club is called to the DC office. They are given a chance to visit the DC office to speak to the deputy commissioner and senior officers. And every year we have a running trophy for the best performing club. And we also have a Poshan calendar wherein we are syncing the government activities with the Poshan club activities.
some facts and figures of what we've done. So if I think a number of us would be aware of the kind of geography, the kind of the kind of place that Assam is. So we have a lot of problem of erosion. What we did is that we took up river bank slope pitching with apron for under SDRF. As I've said, water management is the main convergence is the main mantra here. We have made water management the responsibility of each department. Generally, in all of the districts that I have been collector, I have seen that water management activities are carried out by various districts, but these are in silos, by various departments, but these are in silos, and these departments do not speak to each other. So when I joined, I tried to ensure that there was convergences of schemes and these departments spoke to each other, because sometimes it would happen that one scheme, one department would take, it would become defunct, another department would take. So why do we not take up plans that build up on each other? So this is what essentially we've done, and the outcomes are here for all to see. With the river bank slope pitching, we could benefit about 5.1 lakh population. Soil conservation department, 1948 hectares have been covered. We also started taking up wetland conservation. So a good part about a district, about a tribal majority district, is that in general, the tribal population is not against any kind of conservation activities. So we do not really need to push them very hard, even if it means that they are giving up some of the encroached areas. They are generally very okay with that. And we, because of the public support, we could easily conserve about 17 numbers of wetlands. Some of the other riverine activities I have mentioned on the right side. Some photographs of the work that we've done. Again, some other interventions. Kokrajhar and most of Assam has this problem of encroachment. So, in fact, this was an idea that I have got from the National Water Mission itself, that why do we not start mapping and geotagging our water bodies? And we started this exercise. I think the last time I was in this webinar, this idea had come up. And since the last webinar, I think Sangamitra would know when, that was maybe a year back. Since the last webinar, we have been able to map 60 water bodies. Saumya has talked about Amrit Sarovar. We have taken up 76 numbers of Amrit Sarovar projects, and we would be using these as fisheries. We would be giving training to the SHGs. So these Amrit Sarovars are also generating income to about 760 SHGs, covering 7,600 households. In Assam, we have a category called Jalatak in our revenue, which basically are like derelict water bodies. So over time, we have started reclaiming these Jalatak bodies. And on the right, you can see the quantified outcomes. So these are some of the interventions. I'll not go too much into details of this. Amrit Sarovar, Saumya was talking about. So in the urban part, in the rural part, we have taken up 76 Amrit Sarovars, which are huge water bodies, and we would be using these also as fisheries. In the urban part, these same Amrit Sarovar water bodies, we are taking up as, you know, places where people can come and visit. And also additionally, we are, providing it as a fishery option. But the main idea of developing Amrit Sarovar in the urban areas is to have people come and see clean water bodies, develop parks, develop amenities, and have people give the townspeople areas where they can come and visit with their children. So here you can see on the left hand side, this is in fact a water body which is right next to the DC bungalow. It was right in front of my bungalow, and in a very short period of about 2 to 2.5 months, we have been able to create very nice walkways and clean out the water body. Again, dovetailing of schemes. As I said, the departments were talking in silos, and very often water conservation schemes were, at the bottom rung of priority. So even in the DDC meetings or all the meetings that we chaired, we would not think about water, talk about water. But when I started compiling this data, the departments also started behaving with a greater deal of responsibility. Earlier, it was a very half-hearted attempt. Any water related project that was taken was very half-hearted because nobody would, really come and monitor. So here what we did is that we started monitoring the water bodies with more attention. And so through this dovetailing, we could achieve very good quantifiable results. Also considering the cropping pattern, considering the
geography of Assam and of Kokrajhar, we saw the drip and sprinkler irrigation systems as and where required. We could map it, like in certain banana plantation areas, the drip system is better. In certain areas, where we have tea plantation, sprinkler is better. So through this mapping, we could also enhance the crop production and productivity. Afforestation measures are being done. I've talked about Poshan clubs. So one very beautiful idea that we've been doing is that whenever a girl child is born, these Poshan club members go and visit the girl child's family and they plant valuable and fruit bearing trees. And in addition to that, they also do various other plantation activities. We are also taking up, generally the social forestry department has saplings in their nurseries, but these are not actually planted, actually put in use. So we have done plantation of about 2.7 lakh saplings along with protection measures in various parts of the district. Also through NREGA, we are creating common water bodies and also doing community-led, community-managed plantation through various afforestation schemes. Some of the photographs. Community for water management. So the women self-help groups are also being used in a very big way. For example, in the Jal Jeevan mission schemes, now the village water sanitation committees are led by the SHG women of that area. We are also training these SHG women in water testing, water quality testing, where a scheme is defined so that they report it to the concerned block, to the concerned department immediately. And these are some of the benefits accrued, which, I have already talked about. I'll just take a couple of minutes more to highlight some of the schemes in my other district, which is Gwalpara. I was Deputy Commissioner there from 2018 to 2021. Gwalpara again has formidable issues of access and reach due to the very difficult terrain and topography, comprising of an undulated landscape, comprising of various sources created by the braided Brahmaputra and some forested areas as well. It is an aspirational district lagging in HDIs. It has a sensitive border with Meghalaya and one of the very heterogeneous population mixes comprising of tribals, comprising of minority population and so on. So one initiative that I would like to talk about is because I have seen when I go to these water seminars, ma'am, what I see is that people generally if we look at Gujarat, if we look at Rajasthan, these people have very traditional water conservation practices because these are areas where water has always been scarce. But for a place like Assam, we do not really have a very hardcore kind of a traditional system of water conservation because we've never really thought of water as something that needs to be conserved. So to create community awareness on water conservation, water management, we took up certain Anganwadi centers and we put these basic rainwater harvesting, groundwater recharge schemes. These are very low cost, but at the same time, these can be used to showcase to the community the need for water management. So in certain Anganwadi centers, we have set up these rainwater harvesting structures, which has led to a better engagement of guardians in water management. Through crowdsourcing and through CSR, water purifiers were installed. And again, convergence with NREGA, we have taken up we conducted fishery training. We provided training in fishery management, and not only these are not just edible fishes, also very beautiful ornamental fishes. And I'll just end with this Urpat Beel. Urpat Beel, ma'am would be aware, it is one of the largest beels of Lower Assam, and we had done a geo survey kind of thing with the help of Gwalpara College, and we saw that from 680 hectares in 1968, it has shrunk to about 520 hectares. So what we did is that we held I'll not talk too much about the Beel, but I'll straight away go to what we had done. We had done a community participation exercise, a PRA, participatory rural appraisal exercise. And the idea was how to conserve the Beel and at the same time create livelihood options for the communities that are residing around the Beel. This was how we did the PRA. We had focus group discussions, interviews. We mapped out a timeline, resource mapping, and so on, some of the exercises. And we asked these people, what are your livelihood options and how is the Beel helping you with that?
we did a ranking of the ranking of the livelihood options, and these were some of the insights from this PRA exercise. We could do a priority ranking, and we saw that agriculture remains the mainstay of livelihood generation. Also, almost every individual is involved in cultivation in some form or the other. Next to agriculture, fishery is the next best option, and these people are, business ranks very low in their scheme of things, and labor is another source of dependency. So based on that, we took up various initiatives. Of course, we did the restoration drive, and like I said, in tribal areas it is easier to work because generally people are willing to give up their encroached land. So this area is entirely covered by Rabha population, some Bodo population, and they were willing to give up the areas that they had taken up for various kinds of agricultural activities. So we could do the restoration drive. We wrote to the government asking for a walking track with green technology, and I recently went there on 1st of January, and this track was under construction. So it was really nice to see that, and eviction was done, and also GPS tracking of the entire area has now been done. Through Assam Darshan also, we could get help from the PWD department, improvement and upgradation of key infrastructure and connectivity. And these are some of the zones which are further coming up: recreational zone, conservation zone, and livelihood zone. So these activities are further in the offing. We had conducted joint surveys, so this is how this whole exercise had come about. And some of the tangible changes has been that we now have a eco-friendly elephant corridor, which was not there earlier. Earlier, oftentimes when I was crossing, from Gwalpara, when I was going towards the other border, we would often encounter herds of elephants or rogue. So now we had a eco-friendly elephant corridor, and we also started getting more and more migratory birds. The scope of grazing was enhanced. Conservation activities we could better take up conservation activities. Also, certain intangible changes. The area has become even more beautiful. We also have tourists coming from Guwahati now, and in the months of December and January, more picnickers are seen. And we also have a local, the local villagers have formed a committee which takes care that these areas do not get degraded. Creation of a fish breeding center and so on. So this is in a nutshell. These are some of the activities that we have taken up. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Varnali. Your presentation reminded me of Gwalpara. My daughter was very small at that time. She was just 2 years old. And so often I had to work late in office. So since there was this elephant menace, and they usually came in that Surya Pahad area. Wow. So whenever anybody would ask her, I had, told her that I am going to get rid of the elephants. तो हम हाथी भगाने जा रहे हैं. So whenever anybody would ask her, माँ कहाँ गए, वो हाथी भगाने गए. So I'm so glad that, and even Parvati Barua, the great elephant master, yeah, but couldn't do anything. They used to come, have the beers that were brewed in the tribal houses, और मस्त होके पूरा एरिया बर्बाद करते थे. So I'm so happy. I could not find a solution to that hathi bhagana. Constantly I was get out because of this hathi bhagao. But Varnali, the best thing about your presentation, because I think you realize the importance of economics a lot. So I've seen that wherever you go, livelihood for you is very important. So water being of economic value is something which gets highlighted. Saumya in Varnali's presentation doesn't so much in yours. That how she's creating livelihood opportunities also. Because I was asking somebody that would you mind paying for water, water price tariff, or they said ki we won't mind if we are assured of getting the amount of water we need. We won't mind paying. So similarly, if they will rever water more, if they realize that okay, water is a source of our livelihood,
So that is another key takeaway from Varnali's presentation that we can, and I like the way she has divided that Beal work into three areas: the conservation, recreation, and livelihoods. That was some can be for conservation, and some because that reduces the conflict of the people, and the way she goes about doing PRA and involving the community in the whole exercise, and especially with her potion club, she opens it wherever she goes. But that's also a very good way of taking everything under one roof, all the subjects. But of course, Saumya's is like technically and everything ekdam GIS based and measured, but Varnali's is more softer approach to water, uh, and what she says is very true, that in eastern India, like Bengal, Assam, Bihar, where we have rivers being so Abundant. beneficial fertilization only, we don't give them importance in water conservation. And of course, Varnali, I don't think we need that those kind of water conservation structures which are needed in, like, say, we don't need a step well in Assam at all. But yes, this is also true that in Assam, most of the water falls in certain seasons, and then there are real dry seasons. For those seasons, we need to conserve water, but maybe not in the way it is done in, yeah, like your spring sheds. Since we have hilly terrain, I was reading. I'm planning to get that person to speak to you all. He is from ICROF, Dr. Chandrasekhar. So the what he has done is that in his village in Andhra, there is a river flowing across his field and farm, but it's slightly undulating. So somehow he has near to that stream, not a river, stream. He has his land, which in which the water just percolates. He doesn't have to irrigate or do anything. It just percolates, and he does his farming in that way. So those are the kind of technologies which I think Northeast के लिए बहुत beneficial होगा because of the topography. And so all in all, excellent presentation, Varnali, as usual. So over to you, Savik. Thanks a ton. Thank you. Thank you so much, ma'am. I would like to thank Archana Varma, Mission Director of National Water Mission, Minister of Jal Shakti, Government of India, for I can say playing the role of the striker, because she has been the keynote speaker. He not only set the context but also guided the young officers from the states like Assam and Uttar Pradesh. We had Varnali Deka, Deputy Commissioner of Kokrajhar, Assam, and Saumya Pandey, Chief Development Officer, Kanpur Dehat. And in this edition, the 36th edition of this Water Series webinar, it also like a deja vu kind of a feeling I got, because it came to, we all came to know that Archana ma'am knows Saumya ji earlier, and Varnali ji as well. So it was wonderful, wonderful kind of a union. But at the end, I will end with what Archana Varma said in the beginning, that aim of this webinar series has been to put forth the highlight, to put forth the idea of what National Water Mission stands for. It's much beyond the casual campaign. It's about breaking the silos in the water ecosystem, and especially bringing back the respect for water. And also, she talked about the future program, that district scientific program. So there has to be amalgamation of district scientific program, community participation, getting the message to the school children, as ma'am was saying, getting the message of PQ to the school, because once the children are aware of the importance of water, it will automatically will go spread in various sectors as well. And we are quite happy to see that when Archana Verma talked about her vision and Innam's vision, both Varnali Dek and Saumya Pandey in their own respective presentations actually showed that they're doing that kind of things in their own way. And as we all know, that India has got its beauty. What we can do in Assam, maybe we cannot do it in Uttar Pradesh.
but Assam and Uttar Pradesh can do their things on their own way to conserve water to make a better future. On this note, we end this edition of the Water Series webinar here. Catch us for the 37th edition as well. Thank you so much. Goodbye. Take care. Thank you so much, ma'am. Thanks, ma'am. Thank you, Souvik ji. Thank you. Thank you.